very good afternoon, Pratiksha, Sakshi, Kajal, Bhumi, Twishi, Aditya, Riya, and all you guys. Yeah, your doubts are always welcomed. Yes, Savik. The Himalayas region, eastern part of Himalayas experience more rainfall but less snowfall. Western part of Himalayas experience more snowfall and less rainfall. So what can be the reason? The reason is that part will be discussed in Indian geography, because that section is basically for Indian geography. See, still there are two factors those are responsible for, maybe multiple factors as well, but the two are more prominent. The one thing, so one thing what you will find for Himalayas, no? This is what this Himalayan range. So Himalaya is more prominent in western part of it, right? So Himalaya overall length is almost 2,400 kilometers. You will find it is more prominent in terms of its width and in terms of its altitude or elevation as well. तो ये ज़्यादा रहेगा on its western margin या central margin as well, Mount Everest और कुछ regions है. But if you consider this case over here in the eastern part, Himalaya is quite like a like a broken chain of mountain. Like कि अगर north east में देखोगे तो you will find there are many ranges over there. Dafla Hills, Abor Hills, Mishmi Hills, right? So basically you are from Arunachal, right? So you must be knowing क्या Abor Hills है वहाँ पे, Abor, Dafla. So you know these hills are the broken chain of Himalayan mountains. Himalaya इतना say less intensified है over in this region, you will find Himalaya actually loses its Himalayan characteristics over in the eastern part. अब जब ईस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक्स में ये केस है नहीं, तो देखो स्नोफॉल, यस हमेशा, सो स्नोफॉल इज बेसिकली व्हाट, स्नोफॉल होता कब है, जब जितना ज्यादा एलिवेशन होगा. क्यों कि लास्ट रेट वी हैव सीन, जितना ज्यादा ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो वाटर का आइस कन्वर्ट होगा ना, सिंपल, दैट इज व्हाट द फैक्ट. सो एज हिमालय हैज हायर एलिवेशन इन द वेस्टर्न मार्जिन, you will find more ice cover over here in comparison with this particular. The second factor that is again worked over here for this particular case is the phenomena of western disturbances. Phenomena of western disturbances. We'll find, देखो अभी western disturbance you are pretty much aware about, current affair में चल भी रहा है. Okay, so this western disturbance is due to say mainly you will find in the winters, ठीक है, winter, December to March, April, May तक चलेगा in fact, no doubt. And what you will find, this western disturbances wind, say they carries enough moisture and further due to its upliftment, फिर ये क्या होगा, precipitation. So there are two factors responsible for the western Himalaya is a true Himalaya at the very first instance, and the second thing you will find western disturbances, the presence of, क्योंकि the thing is monsoon range का इतना potential नहीं है that they just could reach over here and lead to snowfall, and even if they reach, you will find they are having a bit less potential for snowfall or rainfall as well, due to they lose their moisture over in between itself. ठीक है, so western disturbances and this the real mighty character of Himalaya you will find in central part and western part as. So that is the reason कि यहाँ पे ज़्यादा है west snowfall और east में comparatively कम है. Rainfall is so much in the eastern part. Yes. Now the reason for that matter is, now the reason you will find, देखो
higher rainfall you will find, like say for example Mawsynram, you must be knowing Cherrapunji Mawsynram, right? Meghalaya. Now there are 3 hills. Can you let me know the names? Yes, Jaintia, right? Garo, Khasi and Jaintia. Yeah, you can a bit louder as well, right? कि सही तो है, गलत होगा तो गलत होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, right? क्योंकि मेरे क्लास में मेरे भी तो कुछ आर्गुमेंट गलत होते हैं ना, right? तो that's not the issue. So we'll find कि Garo, Khasi, Jaintia and Beryl range over there in Meghalaya. अब देखो, the case is जब monsoon enters into this Indian peninsula or that region, it get divided into 2 branches. एक branch है Arabian Sea branch, एक है Bay of Bengal branch. तो Arabian Sea branch is what, no doubt it is having enough moisture as well, lead to high precipitation as well, but Bay of Bengal branch is what having comparatively higher potential. It is faster, it carries more moisture, and due to the presence of this hills and Himalayas over here, whatever the terrain, it lead to intense precipitation in this particular margin. But even if precipitation is there, the upliftment is not enough. देखो सिंपल सी चीज है, अभी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ना क्लाइमेटोलॉजी, ये एक्चुअली क्लाइमेटोलॉजी का पॉइंट है. तो द थिंग इज कि देखो रेनफॉल और स्नोफॉल में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज सिंपली व्हाट यू विल फाइंड, रेनफॉल it occurs at condensation point, snowfall it is at freezing point. ठीक है, सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट. अब इतना तो pretty much clear है. कंडेंसेशन पॉइंट इज व्हाट, इट इज मच अबव इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर स्केल देन दैट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो जितना ज्यादा अपलिफ्टमेंट होगा किसी भी क्लाउड का, द कंडीशन देन यू विल फाइंड फेवरेबल फॉर स्नोफॉल. वाइल अगर अपलिफ्टमेंट कंपैरेटिवली कम है, मतलब मॉइस्चर कंडेंसेशन हो सकता है, रेनफॉल ओनली. And that is the case even if it has enough moisture, but due to the absence of enough upliftment, you will find rainfall over here. Otherwise there would be like say snowfall. अगर इसकी हाइट भी इतनी होती ना, तो there would be a snowfall there in the eastern part. Got it? और भी क्लियरिटी आएगी जब हम precipitation टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है, cloud and precipitation we will discuss those points. Okay, yes, गौरव, राधे राधे. Yes. Bishop. Himalaya extends to some parts of Mizoram or Manipur also. They are Purvanchal. Yes. Lushai Hills, Mizo Hills, Naga Hills, and. So if the question that says how many states say border with the Himalayas, can we add northeast? That was a question asked in examination. अभी इंडियन ज्योग्राफी वाली अगर पीपीटी में क्वेश्चन निकालूंगा तो उसमें मिल भी जाएगा. देखो एक 2018 there was a question in prelims. 3 statement were there. Himalayas spread only in the 5 states. ठीक है, Himalayas spread only in the 5 states. क्वेश्चन पूछा है. वेस्टर्न घाट्स, spread only in 5 states, and third statement was Pulicat Lake spread in 2 states. That was a question that was asked in 2018 prelims. Yeah, 17 या 18 होगा, year हल्का सा change हो सकता है, but you will find that question was already been asked. तो पूछेगा नहीं, पूछ लिया है यूपीएससी ने, मींस आगे भी पूछेगा, नो डाउट. दैट्स अ गुड थिंग, यू नो, कि जब यूपीएससी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, चलो ठीक है, पास में पूछा है तो दैट्स नो इशू, बट इफ लाइक यू आर ऑन अ राइट ट्रैक इन द सेंस यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर एज वेल. एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन अब चलो पूछ लिया यूपीएससी ने, नो इश्यूज, बट यू आर हैविंग द स्किल नाउ, डेवलप हो रही है धीरे धीरे, यू विल फाइंड Himachal, Sikkim, Arunachal Pradesh. Manipur, Mizoram, can we add also like 7 states? Purvanchal, it is a part, or it is an eastward extension of the Himalayas. ठीक? So over there, what you have to consider, it is as, even though a bit less mightier character, but still it is a part of Himalayas. तो 5 states से तो ज्यादा ही है हिमालय का spread, 100%.
But the state would be in the Jammu Kashmir. That question was asked in 828. हाँ, so Jammu Kashmir was a state, right? Ladakh and Jammu Kashmir. हाँ, तो even after you will find the number goes somehow larger. अच्छा, what about Western Ghats? कितने स्टेट में है Western Ghats? 5. Tell me. Atlas, yeah. All you guys online as well. चलो Atlas निकालो, देखो. तो मुझे आज पता था कि आपने लाया नहीं यार, बस इसीलिए. आदित्य इज लाइक 4 स्टेट. कहाँ पे है 4 स्टेट आदित्य? कौन से, इंडिया में हो या पाकिस्तान में रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो? 5 स्टेट्स. ओके, 5. अच्छा, टेल मी दोज नेम्स. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला. Aditya is with Tamil Nadu. So even with Tamil Nadu, he is with the 5 state, and you are say excluding Tamil Nadu, you are with the 5 state. Either in Nilgiri or like in somewhere in Andhra Pradesh, Eastern Ghat and Western Ghat made together, right? That junction is Nilgiri, right? That range which joins the Eastern Ghat and Western Ghat, that is Nilgiri range. Okay. Western Ghat, Eastern Ghat, that is what a connecting link between them, Nilgiri hills, and you will find Western Ghat is spread in 6 states, right? As you mentioned, and Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. ठीक है, तो तमिलनाडु में भी एक्सटेंशन है ऑफ कर्नाटका. सो 6 स्टेट. दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, एंड वेयर इज पुलिकत लेक? इट इज इन आंध्र प्रदेश. सो डू चेक इट. देखो कहाँ है पुलिकत लेक. हर्षित, हाँ, ओके. Eastern coast of Andhra Pradesh, sure. Tamil Nadu. So it doesn't form any part of Tamil Nadu or include any part of Tamil Nadu. देखो क्वेश्चन क्या लेवल के, छोड़ो ये आंसर तो क्या भी, इसका आंसर तो सही है वैसे. 2 स्टेट, आंध्रा एंड तमिलनाडु, ठीक है. बट क्वेश्चन की लेवल समझ रहे हो? दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देयर इज हार्डली 0.0001% प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन वुड एवर बी रिपीटेड इन एग्जामिनेशन. आ जाएगा, वी कैन नॉट डिनाई दिस पॉसिबिलिटी. डिस्ट्रिक्ट मे बी नॉट, ओके, बट पूछा था. अब वेस्टर्न घाट के लिए देखो, डिस्ट्रिक्ट में पूछना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वो बहुत माइक्रो स्टडी होगी. बट दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर थार डेजर्ट. द जैसलमेर, सी थार डेजर्ट इज व्हाट आई डोंट रिमेंबर जस्ट दैट स्टेटमेंट, दैट इट्स स्प्रेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट. यस, जैसलमेर एंड बाड़मेर, दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन, राइट? बीका, हाँ, बहुत सारा स्प्रेड है वैसे उसका. बट आर यू गेटिंग कि इसका डिस्ट्रिक्ट भी पूछा है? तो द थिंग इज, वी कैन नॉट डिनाई दैट पॉसिबिलिटी, बट स्टिल बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आएंगे तो इट सीम्स डिफिकल्ट. बट एट लीस्ट फॉर अ रेंज लाइक कैमूर हिल्स, और एट लीस्ट अ रेंज लाइक से फॉर गारो हिल्स, दे मे आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल. तो जितने ज्यादा पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करोगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन से इन एग्जामिनेशंस. यही है, ठीक है. तो आंसर तो पुलिकत लेक स्प्रेड ऑन 2 स्टेट, आंध्रा एंड तमिलनाडु, ठीक है. सो डू लोकेट इट एज वेल, दिस पुलिकत लेक, ठीक. एंड व्हाट अबाउट टास्क? डिप्लोमेसी, हाँ, यस. gets involved in the
डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एनजीओ सिविल सोसाइटी। हाँ, ओके, जस्ट ट्राई टू ब्रेक द आइस। हाँ, ऑफिशियल एंड नॉन back channel type. Okay, okay. So those are not the direct representative of the government, but somehow they will have some influence on the policies of the government. ठीक है, जैसे कि कोई आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाइना के साथ डील कर रहे हैं, सो बाय दैट सेंस यू विल फाइंड कि कुछ उनका इन्फ्लुएंस है आर्मी में, तो कुछ न्यूट्रलाइज हो सकते हैं रिलेशन, राइट? न्यूट्रलाइज इन सेंस कोई भी सेंस में। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर? means like that power is military, mostly defined by the military power, economic power. Yes. The cultural power, religion, the Buddhism. Yes, Buddhism. कल वाला जो आर्टिकल था, right? And अच्छा, what about that golden triangle and crescent? There are the two regions. There are open traditions. These two are regions, and India is stuck between them. India is, yeah, golden crescent. देखो क्रिसेंट है ना, इस्लामिक कंट्रीज है तीसरी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सो कंफ्यूजन होने का कोई केस ही नहीं है। क्रिसेंट तो वैसे भी उनके लिए बहुत सेक्रेड साइन है ना, तो यस, दिस क्रिसेंट shaped region, that is again say one of the storehouse, the largest producer of drug, and the golden triangle you will find over here. Yes, Thailand, Laos, Vietnam, and there is a part of Myanmar as well. ठीक है, you will find this is a golden triangle. Golden triangle, golden crescent, these two are the major producer of drugs in the world. And India, you know, say India vulnerable क्यों है? Due to this position. Yes, इस साइड में भी ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, रीजन है, इस साइड में भी है, तो ऑब्वियस है फिर तो ड्रग ट्रैफिकिंग, तो ये तो कॉरिडोर हो गया ना इनके लिए अल्टीमेटली। एंड यू विल फाइंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, ये ड्रग रेट। पंजाब में ड्रग का प्रॉब्लम क्यों ज्यादा है? यस, वो उड़ता पंजाब मूवी में तो दिया भी है ना कि यू विल फाइंड कि इसी वजह से। और सेकेंड एक चीज है, कैन यू कनेक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ड्रग इशू इन पंजाब? देखो ऑप्शनल में कुछ ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सोचना होगा और ऑप्शनल में कुछ ऐसे केस स्टडीज भी डालने होंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ड्रग कंजम्पशन। हाँ, एग्जैक्टली, यस, नो, नॉट टू इन्वेस्ट। इंडिया में वैसे पंजाब हरियाणा में कहीं प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता वैसे ड्रग का, होता भी होगा हिमाचल उत्तराखंड उस साइड में है भी इलीगल, बट व्हाट एज ही मेंशन कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s के बाद, ठीक है, 60s 65, एंड दैट टाइम से यू विल फाइंड से पंजाब हरियाणा इज रियली अ ड्रॉट प्रोन रीजन कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिल्ली में 70 जितना है उतना ही पंजाब हरियाणा में। बट व्हाट हैपेंड ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, राइट? एंड व्हाट हैपेंड कि अब एक्सेस प्रोडक्शन जब होने लग गया तो इनके हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, राइट? सो यू विल फाइंड कि जो ये यस they wield a significant political power due to this money, they wield a significant the border transport as well, ठीक है? और जिससे फिर क्या हुआ, जो यूथ था वो यूथ ड्रग एडिक्ट हो गया, and that is how you can connect this green revolution and drug addiction in Punjab and Haryana as well. देखो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये चीजें जैसे मूवी भी है, जैसे उड़ता पंजाब, आई जस्ट अगेन रिकॉल दैट मूवी, कि उसमें यही दिया है कि कैसे कैसे ये चीज में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसा नहीं होता यूपीएससी कर रहे हो दैट यू आर नॉट सपोज टू वॉच एनी मूवी, नो। अगर मूवी को अगर प्रॉपर यूज करोगे, स्टोरी को टेकिंग राइट कंटेक्स्ट, यू विल बी रैदर अप्रिशिएटेड इन एग्जाम 100%। किसी जस्ट इमेजिन कि ऐसे लिख रहे हो और उसमें कोई ऐसा ही टॉपिक है, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग इशू या फेडरलिज्म, और किसी मूवी में ये टॉपिक आया है सेम, एंड यू जस्ट स्टार्टेड विद दैट पर्टिकुलर, yes, you would be rather appreciated 100%, क्योंकि मूवी तो हर कोई देख रहा है,
बट देखने का अप्रोच आउटलुक क्या है, दैट व्हाट डिफाइंस से दैट यूटिलिटी, ठीक है। सो दैट वे। अच्छा, गोल्डन क्रिसेंट इज अ ग्लोबल साइट फॉर ओपीएम प्रोडक्शन। अच्छा, एंड आई थिंक इन द करंट अफेयर अगेन उत्तराखंड, आई गेस उत्तराखंड हैज अलाउड नाउ, और उत्तराखंड और एक हिमाचल, आई थिंक दो स्टेट है जहां पे ओपीएम प्रोडक्शन इज नाउ प्रीटी मच लीगलाइज्ड, राइट। तो ये भी करंट अफेयर में न्यूज चल रही थी, तो देख लिया करना ऐसे इन से अगेन। Okay, I'm not aware about Bengal. I'm aware about this. Yeah, so it may be a case कि फ्यूचर में और भी स्टेट परमिशन दे देंगे, that is the case. मैं तो कल ही था, केरला स्टोरी देख के आया हूँ। Okay, केरला स्टोरी पे, yes. देखा केरला स्टोरी किसी ने? हाँ, तो फिर इतना जब 1000 करोड़ नहीं, वेस्ट बंगाल में तो इतना हाईलाइट ही कर दिया उस मूवी को, तो फिर अब तो हर कोई देखेगा। मैं भी सोच रहा हूँ उसको देखना है, ठीक है। तो अब वो तो रहेगा ना इतना, हर एवरी डे यू विल फाइंड द न्यूज ऑन केरला स्टोरी। तो है, एमपी ने टैक्स फ्री कर दिया, यूपी ने टैक्स फ्री, अभी पढ़ रहा था मैं लिटरली, अभी देखो न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़पेपर में देखो अभी एक और न्यूज है, यू विल बी लाइक हाँ कोड, ये देखो ये वाला केस, मतलब यूपी में कुछ एडवांस लेवल ही चलता है। वैसे यूपी में जो चीजें चलती है ना, वो कुछ और लेवल पे ही चलती है। कहा, हाँ, यस, सी द केरला स्टोरी, टैक्स फ्री इन यूपी एंड सीएम टू वॉच इट विद द एंटायर कैबिनेट। पूरे कैबिनेट के साथ बैठ के अभी वो केरला स्टोरी देखी। तो यूपी में कुछ अलग चीजें चलती है वैसे। हाँ, यहाँ पे भी यही है ना। अच्छा, ये अपील अगेंस्ट स्क्रीनिंग ऑफ द केरला स्टोरी। सो द थिंग इज कि ये पॉलिटिकल इशू है वैसे, मोर ऑफ। Yeah, I accept your argument, except nonsense like. क्योंकि you know बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे when you will be standing on the dais being an IAS officer, तो ऐसे जब क्रिटिसाइज कर दोगे किसी चीज को, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो उसके बहुत सपोर्टर है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यू आर सपोज्ड टू बी न्यूट्रल। हाँ, यू शुड हैव योर ओपिनियन, राइट, बट दैट ओपिनियन शुड बी बेस्ड ऑन सम रैशनल अप्रोच। और जहां तक हो सके, अगर मतलब अब एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, हमको लैंग्वेज भी मतलब ठीक है, नो इशू, नॉनसेंस इज नॉट दैट वे, बट द थिंग इज कि जितनी सिंपल सोफिस्टिकेटेड रहेगी तो दैट वे, तो ना किसी के इमोशंस हर्ट ना हो उससे। दैट इज अगेन व्हाट यू हैव टू कंसीडर एज वेल। तो केरला स्टोरी 1000 करोड़, ओके, 1000 करोड़ तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ कौन सा है ये, आदि पुरुष तो 100 करोड़ भी चला गया तो बहुत है। वैसे 50 करोड़ भी नहीं कमाया, विशाल ने तो कह दिया। ओके, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है योगी जी के टक्कर में। ओके, सो यस, दिस वन अगेन देखो, दिस opinion page. You know which state is the largest producer of apple? Himachal Pradesh. Sure. कश्मीर, ठीक है। अब तो खैर अब तो डिवाइड हो गया, तो अभी कुछ स्टेटस चेंज हुआ रहेगा, बट या मेनली देखो एप्पल इज बेसिकली व्हाट, टास्क देना था पर चलो बता ही देता हूं मैं कि एप्पल इज बेसिकली व्हाट दैट हॉर्टिकल्चर प्लांट, फ्रूट प्लांट एज सच व्हिच रिक्वायर्स अ लो टेम्परेचर अराउंड 5 to 10 डिग्रीज। तो जितना कम टेम्परेचर रहेगा एप्पल का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड और भी कुछ विंड देखेंगे हम, ज्योग्राफी का भी कनेक्ट है इसमें। तो नाउ दिस एप्पल कल्टीवेशन इन हिमाचल, देखो ये जो न्यूज है ना, दैट इज व्हाट एग्रीकल्चर प्लस, अगर मोर अप्रोप्रिएटली अगर ले हम तो टेक्नोलॉजी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, कि हाउ, अब ये आर्टिकल वैसे थोड़ा बिट निगेटिव है, निगेटिव इन द सेंस के it is what it is having the discussion about how artificial intelligence in apple cultivation has led to a problem in that particular practice. ठीक है, तो अब इसके कुछ पॉजिटिव्स भी दिए होंगे कि it was supposed to with this intent and what actually happened on the ground it is something different. ठीक है, so you can use it in that way कि टेक्नोलॉजी के जितने पॉजिटिव्स दिख रहे हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं. दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ केस स्टडी फॉर यू. जब कभी GS3 में आंसर लिखोगे बायोडिवर्सिटी में या GS1 एग्रीकल्चर रिलेटेड आंसर लिखोगे, ओके, यू कैन यूज दिस केस स्टडी एज, ओके, गो थ्रू दिस न्यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेसेट्स ऑफ दिस न्यूज. इंटरव्यू में कभी पूछ लिया तो, क्योंकि हम ना हाउ, सबसे पहला क्वेश्चन मतलब अगर कोई बैकवर्ड रीजन है या फार्मर रिच स्टेट्स है तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा हाउ टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ फार्मर्स इन योर स्टेट. That was asked say for me as well. महाराष्ट्र में क्योंकि फार्मर सुसाइड बहुत ज्यादा है, तो that was asked as such. तो अब नाउ अब उसमें टेक्नोलॉजी तो बोल दोगे, if that question would be counter as कि there are many limitations of technology as well, तो फिर कुछ arguments आपके पास होने चाहिए accordingly. Yeah, it lead to that side as well. ठीक है? So this article is important. Where is Taiwan? Taiwan करंट अफेयर में तो है. कहाँ है ताइवान? ईस्ट चाइना सी. ओके, एंड विच इज दैट स्ट्रेट विच सेपरेट चाइना एंड ताइवान? ताइवान स्ट्रेट. ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान? ताइपेई. ओके, इतना, हाँ, इतना नहीं पूछेगा बट एटलीस्ट यू आर अवेयर अबाउट. एंड व्हाट इज द मींस ताइवान इज फेमस फॉर yes semiconductor electronic industry as such. ठीक है, तो that way. चलो बाकी देख लेना फिर what it talks about. हाँ, ये है वैसे GS2 का Assam plans to ban polygamy. हाँ, and one thing again, the cheetah from South Korea, Africa dies in Kuno National Park. Have you located Kuno National Park? टास्क था, किया है ना लोकेशन? पूना पालमपुर पार्क. चलो किया है, ठीक है, उसमें देख लेना और भी कुछ लोकेशंस अगर हो तो. एंड यस, कितने चित्तास आए थे, कहाँ से आए थे वैसे? नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, एंड या 3 of them they died now. ठीक है, 3 of them they died. And according what I was going through the news as well, तो नीति आयोग के कोई मेंबर थे, तो according to him at least 50% of mortality is expected. कि जो भी हमने चीतास ले आए ना अफ्रीका और नामीबिया से, वहां से, तो 50% of them are supposed to die. क्यों? क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन नहीं हो पाएगा. कल हम न्यूज देख रहे थे, देखो 5 चीतास टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पूनो पार्क. तो ऐसा नहीं होगा इमीडिएट अफ्रीका से ले आए और इमीडिएट पूनो पालमपुर में छोड़ दिया, नहीं. से दे फर्स्ट have to make them acclimatize with the conditions. कि अफ्रीका का और इंडिया का क्लाइमेट डिफरेंट है, तो उसके लिए अडैप्ट करना है. then what they are allowed to. हाँ, ये प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन. acclimatization is what to get adapt with the climatic condition. that is what acclimatization condition. ठीक है, तो ये केस है और उसमें से सिर्फ एक की डेथ हो गई. so 3 now and further you will count, you will have a continuous count of this number. अच्छा, एक अगेन देखो यहाँ पे दिस न्यूज, देयर इज ए स्नोफॉल इन द वैली रीजन. यस, दिस इज द मंथ ऑफ मे एंड देयर इज ए स्नोफॉल. एंड एज सो वी कास्ट के वेस्टर्न हिमालय में ज्यादा क्यों होता है, ईस्टर्न हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, नाउ देयर इज मेंशन अबाउट अटल टनल. ओके, सो व्हाट इज द टास्क नाउ? यू हैव टू लोकेट दिस अटल टनल. Spiti, yeah. So that where is Lahore Valley and Kuru Valley, that is connecting Atal Tunnel. हाँ, ठीक है. So do locate it, collect information about it, and to avoid the Rohtang Pass, this and this was constructed. Okay. For the all-weather connectivity in the Lahore Valley. Right. I'm actually not aware about कि ये टनल के पासेस के लोकेशन मुझे याद नहीं रहते. ठीक है, बट यस इंपॉर्टेंट है. कुछ
नया ब्रिज बन रहा है रिवर पे, ठीक है, या टनल बन रहा है, दैट इज वन ऑफ द, यू विल फाइंड के एशियाज लार्जेस्ट टनल भी रहेगा, मे बी इन डिफरेंट डिमेंशंस, सो गो थ्रू दैट, ओके। चलो ठीक है, ये न्यूज वाला तो सेक्शन कंप्लीट ना। जोजिला दैट इज इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हाँ लद्दाख नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। ओके या चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास, चलो पहले रिवाइज कर लो 1 मिनट व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। काजल, ओके, पढ़ाई से रिलैक्स के लिए मूवी देख, या काजल दैट्स गुड थिंग, देखना ही चाहिए। It seems Riya is absent today. Okay. Then 30 seconds. Done? 30 seconds. Draw that pressure distribution diagram. Global pressure distribution diagram. Labeled it as well, online as well, सभी लोग। Yes, draw the global pressure distribution diagram. Wait, काजल मैं सेंड कर रहा हूँ, कल वहां पे किया था। यस, आज हो जाएगा काजल। एक्चुअली कल मैंने सेंड नहीं किया था वो चीज। Done, all you guys? Yes, this is global pressure distribution diagram. Equatorial low or doldrum, subtropical high or horse latitude, subpolar low pressure belt and polar high pressure belt. ठीक है, और उनकी जो margins रहेंगे या band रहेगा approximate 10 degrees almost, right? You will find that. Okay, now देखो
द नेक्स्ट पॉइंट, हाँ विशाल, सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, हाँ प्रेशर हाई टेम्परेचर, बट सर यहाँ पर टेम्परेचर लो की तो यहाँ पर स्लैंटिंग रेस आ रही है, कहाँ पर? यहाँ पर सब ट्रॉपिकल लो, सब ट्रॉपिकल लो, ये दो फैक्टर्स है। देखो ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दो फैक्टर पे डिपेंड है। वैसे एक फैक्टर बहुत डिटेल है इसीलिए डिस्कस नहीं किया हमने, एक है थर्मल फैक्टर जो कल हमने देखा था, हाई टेम्परेचर लो इक्वेटर और पोल पे, ठीक है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है। एंड सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज डायनामिक फैक्टर। अब डायनामिक फैक्टर विच इंक्लूड द रोल ऑफ द साइक्लोन, विच इंक्लूड द रोल ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, which include the Coriolis effect, and that it leads to the phenomena of, एक और है, वैसे इतना डिटेल में जरूरत है नहीं, but rarefication of atmosphere. तो देखो atmosphere rare, atmosphere is getting rare. It means those molecules are moving away from that particular low pressure belt. इससे क्या हो रहा है, जब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, कल हम देख रहे थे जब 100 से 50 मॉलिक्यूल होंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, लो प्रेशर दैट इज क्रिएटेड। अब ये जो 100 से 50 गए तो 50 कहीं और गए, कहां पर गए, सब पोलर हाई प्रेशर पर, तो वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, हाई प्रेशर दैट इट लीड्स, राइट। सो अब जैसे और भी बेटर समझना है, सी यस, हाँ, सो व्हाट यू विल फाइंड, यू नो, जैसे यहां पे हमने कल देखा था 100 पार्टिकल्स है, 50 पार्टिकल्स से दे मूव्ड अवे फ्रॉम द रीजन। अब ये जो 50 पार्टिकल्स जहां जाएंगे, यहां तो देखो लो प्रेशर बन गया क्योंकि 100 से 50 हो गया ना, तो लो प्रेशर तो यहां बन गया। बट ये जो रेस्ट 50 पार्टिकल्स है, 25 फॉर एग्जांपल, ये यहां पे ऑलरेडी जो 100 थे उन पे और प्रेशराइज भी करेंगे। अब ये नंबर हो गया 125, यहां पे नंबर हो गया 125। देखो प्रेशर अब इंक्रीज हो गया, इट बिकम्स नाउ रीजन ऑफ सबपोलर हाई प्रेशर, सॉरी सबपोलर, हाँ लो प्रेशर, हाँ या व्हाटएवर जो भी, सबपोलर लो प्रेशर, ठीक है, ये जो भी रिवर्स केस बन जाएगा। एंड दैट इज व्हाट दिस फेनोमेना ऑफ रेरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पांसिबल फॉर। ओके, बहुत डिटेल में मत देखना, इसको इतना ही समझना है, दैट इज इनफ। नाउ कोरियोलिस इफेक्ट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस फेनोमेना, कोरियोलिस इफेक्ट, identified with the French mathematician who invented this particular phenomena. देखो Earth rotates, right? As you know, as Earth rotates, due to the rotation of the Earth, it leads to a force in atmosphere. इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में एक फोर्स क्रिएट होगा, and that force is known as Coriolis force, or that effect that it leads to is known as Coriolis effect. Again, it was invented in 1844 by Coriolis, a French mathematician, and this force is not restrictive by any means. Restrictive force नहीं है, ये force है deflective force or deflectionary in nature. In a sense, as I told you that day as well, कि ये जो force है ये डायरेक्शन चेंज करेगा आफ्टर इट एप्लीकेशन, ये स्पीड में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाएगा, इट रैदर लीड टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में, डिपेंड्स ऑन। देखो इन नॉर्थ हेमिस्फीयर अबव इक्वेटर यू विल फाइंड द कोरियोलिस फोर्स लीड टू द राइटवर्ड टिल्टेशन। नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका टिल्ट है राइट या क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज ही है, यस क्लॉकवाइज। However, in southern hemisphere, you will find this wind tilt. देखो इसका अगर इसका लेफ्ट देखोगे, this wind का this way, ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ्ट। You will find due to Coriolis force, this wind get deflected in the leftward direction, or we can write it as counterclockwise as well, right? Are you getting? Or anti-clockwise as well. This southern hemisphere. So Coriolis force, you need to remember this fact, clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise or counterclockwise in southern hemisphere. It is a deflectionary force.
Now, one thing again, right? You are supposed to remember 3 facts about it. 4 facts, in fact. Coriolis force. ज़्यादा याद नहीं रखना. 4 facts. You will find those are enough. पहला fact है, it is a deflectionary force. It is a deflectionary force. Lead to change in direction. The second fact is what? For north hemisphere, rightward or clockwise, and for south hemisphere, leftward or anti-clockwise. Third is it is maximum at pole. इसकी जो इंटेंसिटी है ना, क्या डिफ्लेक्शनरी पोटेंशियल है, इट इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट the Coriolis force maximum at pole, minimum at equator. And yes, this force is, इसका मीनिंग ये है, इसका जो इंटेंसिटी है, that means it is directly proportional to latitude, angle of latitude or simply latitude. That अगर 0 डिग्री एंगल है, इट मीन्स कि इसकी इंटेंसिटी कम है, बट 90 डिग्री अगर एंगल है लैटिट्यूड, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ओके, हाई. दैट इज व्हाट इट मीन्स. लो प्रेशर एरिया, विंड सर्कुलेशन, हाँ, दैट लीड्स टू साइक्लोनिक फॉर्मेशन. काजल, longitudes are no. Longitudes are basically what? These are vertical lines. So it does not have any significant impact on, because it depends on this equatorial position. Sorry, this hemisphere wise, north and south. Like for example, अगर इसका nature अगर होता eastern hemisphere and western hemisphere, then longitude is they are what having some significance or role to play over here. But ऐसा नहीं है. So that is what influenced by this latitudinal position. Clear? All you guys sure? So what about Coriolis force? Deflectionary force है. Second, yes, yes. Third, maximum at pole and minimum at equator. ठीक है? So this is about Coriolis force. Now, हाँ, और एक और भी तो रीजन है, जो इसका रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फोर्थ पॉइंट, राइट? फोर्थ या ऑर्डर चेंज कर सकते हो, प्रायोरिटी में ये है रोटेशन ऑफ द अर्थ. द फैक्टर दैट लीड्स टू द वेरी ओरिजिन ऑफ Coriolis force is rotation of the earth. So for this points, okay, this 4 points enough है for Coriolis force. Speed of rotation, yes, speed of rotation, if it is higher, you will find the more Coriolis force is getting developed. क्योंकि अर्थ जितना ज्यादा स्पीड से करेगा उतना ज्यादा, बट अप टू ए लिमिट. ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से रहेगा तो फिर तो Coriolis force 0 हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन, बट चलो ठीक है, अभी तो डायरेक्टली काइंड ऑफ डायरेक्टली. ना, it is applicable on surface. Is it applicable on surface? है? Okay. कैसे पता चला? ओशन करंट से. ओशन करंट पे एप्लीकेबल है ये? Yes, ओशन करंट पे एप्लीकेबल है. हमने देखा था, you remember? अच्छा, ओशन करंट मैप, have you drawn that map? Yes. Are you in position to draw it again now? Sure. No. चलो. 45 seconds, draw it again. Ocean current map, world ocean current map.
कुछ रफ पेजेस साथ में रखना अपने आप यहाँ से ऑनवर्ड, ओके, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड डू हैव दोस रफ पेजेस विद यू एज वेल। गौरांगी रफ पेजेस है वो, गौरांगी फुल प्लान्ड है कि यस काजल अभी दिस मोमेंट ओनली ड्रॉ वर्ल्ड ओशन करंट मैप। 3 oceans are there: Indian, Pacific, Atlantic, north and south, north and south, north and south. Yeah, be quick with labeling as well. 45 seconds. Harshit, क्यों नहीं हो पाएगा? So just see it again. Okay, copy paste कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, copy paste कर लो। बट इसमें समझेगा क्या आपको? देखो क्या समझ आ रहा है, देखो लैंग्वेज तो देखो उसमें कौन सा लेटर है, स्क्रिप्ट कौन सी है, स्क्रिप्ट समझ आएगी नहीं ना? तो फिर फोटो लेके क्लिक करके करोगे क्या? यस, इफ यू वांट स्टिल ले सकते हो, बट ये लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी ना। देखो कौन सी लैंग्वेज है, अफ्रीका इज नॉट अफ्रीका। मतलब ये वर्ल्ड मैप में जितना अफ्रीका दिखता है ना, अफ्रीका उससे ज्यादा बड़ा है, और आपने उसको उससे भी ज्यादा छोटा कर दिया। ये एक्चुअली वर्ल्ड मैप की स्केल पे अफ्रीका बहुत छोटा दिखता है, जितना बड़ा है एक्चुअल में उसका स्केल कंपैरेटिवली लार्जर। आदित्य, अच्छा, रेड हॉट करंट, ओके, यस, एंड ग्रीन कोल्ड करंट, राइट आदित्य। गौरव इज टाइपिंग। राइट गौरव, जब भीम छोटा हो सकता है तो अफ्रीका क्यों नहीं? सही है। डन। ये तो इनकम्प्लीट है। यहाँ कौन सा करंट है? ये वाला करंट कौन सा है? यहाँ पे भी एक करंट काउंटर जा रहा है, ये वाला करंट है, दिस वन। इसका ऑर्डर गलत हो गया, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक करंट आएगा गल्फ स्ट्रीम, ये लैब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट, ठीक है। ये है कैनरी करंट, ऐसे देखो देखो ऑर्डर देखो, हमने क्या देखा था कि इन नदर्न हेमिस्फीयर इट रोटेट्स क्लॉकवाइज, राइट। तो क्लॉकवाइज जा रहा है क्या? ऑर्डर तुम्हारा गलत हो गया ना, आर यू गेटिंग, राइट। ये जब डायरेक्शन ऊपर जा रहा है दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स फाइन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, नो इश्यूज, राइट। ये जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, फाइन। यहाँ पे जो केस है वो ऐसा नहीं बन रहा है ना, so you have to keep it right in this clockwise direction. And what about this? This is Kuroshio, this is Oyashio, right? And it then lead to this Californian upward नहीं, Californian downward. तो ये complete sense होगा ना? कैरिबियन तो यहाँ है,
Caribbean islands are over here. This is Gulf current. This is Californian current. Californian current. Right? Okay. फिर से एक बार देख लेना, क्योंकि ये फिर से ड्रॉ करना है आपको। वैसे कुछ कुछ चीजें ज्योग्राफी की क्लास के साथ आपके माइंड में इंप्रेस होनी ही चाहिए। ओशन करंट्स है, दिस प्रेशर डायग्राम है, ग्लोबल विंड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ग्लोबल क्लाइमेटिक टाइप्स एज वेल। कुछ ऐसे एरियाज है, वो तो खैर इट्स माय ड्यूटी कि वो तो आपको माइंड में जाना ही चाहिए, इंप्रेस होनी ही चाहिए। डन सविक? यस हमेशा तो देख के ड्रॉ करना था, बनता ही नहीं है। क्यों? YouTube की वीडियो से देखो, इस पे हाउ टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप, हाउ टू ड्रॉ इंडियन मैप, आउटलाइन मैप, यू विल फाइंड कि फिर ड्रॉ कैसे करना है। इसको देखो, ड्रॉ करने के लिए कोई ट्रिक होती है, ऐसे नहीं होता कि रैंडमली, मतलब कि देखो उसके लिए ये जो लूप्स दिख रहे हैं ना, ये कर्व दिख रहे हैं ना, इस कर्व को ऑब्जर्व करना होता है। ये जो कर्व दिख रहे हैं ना, जैसे जैसे शेप जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली राइट, बट एट ए लीस्ट एक उसका जो ब्रॉडर आउटलाइन है वो फॉलो हो जाए। दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू। तो जैसे इंडिया के लिए देखो, हम ब्रॉडर आउटलाइन ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, ये इंडिया बन गया, ठीक है। इन अ सेम वे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये अफ्रीका का शेप कैसे जा रहा है। तो जितना ऑब्जर्व करोगे उसको और जितना प्रैक्टिस करोगे, यू विल फाइंड दैट इज इजी, राइट, एब्सोल्युटली इजी टास्क है। ओके चलो ना, अगेन डू रिमेंबर, देखो ये जो क्लॉकवाइज है नदर्न हेमिस्फीयर, दिस शुड बी क्लॉकवाइज ओनली, राइट, दिस इज व्हाट ए क्लॉकवाइज, ओके, इन नदर्न हेमिस्फीयर, एंड द फ्लो शुड बी काउंटर क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा ही होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्विक, this is north Indian Ocean current. You will find counter current, equatorial counter current over here, equatorial counter current over here, and equatorial counter current over here. ठीक है, इसके ऊपर जो दोनों भी रहेंगे वार्म करंट रहेंगे, नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ओके, इन द बोथ द हेमिस्फीयर, राइट। एंड देन यू विल फाइंड, फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पर है मैडागास्कर, तो मैडागास्कर करंट, मोजाम्बिक करंट, एक ये कॉमन विंड जा रही है। देखो एक ये जो पूरा स्ट्रेच है ना, यू विल फाइंड द कॉमन करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, याद ही नहीं रखना, राइट। सो यू विल फाइंड से ओवर हियर दैट इज मोजाम्बिक करंट, फिर वो मर्ज हो रहा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ, कोल्ड वाटर इज गेटिंग एडेड इनटू, ओवर हियर यू विल फाइंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। डन, फिर से इसको मर्ज कर दो साउथ इक्वेटोरियल करंट में, डन, राइट। देन व्हाट अबाउट दिस अटलांटिक साउथ, यहां पर देखो ब्राजील है, ब्राजीलियन करंट, यहां पे एक आइलैंड है जो हमने डिस्कस भी किया था, फॉकलैंड आइलैंड, राइट, दिस वन, तो ये फॉकलैंड करंट है, इट मर्जेस विद द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, फिर ये आएगा अफ्रीका के कोस्ट में, इट बिकम्स बेंगुला करंट, ठीक है। यहां पे एक और है एग्युलास, ठीक है, दैट एग्युलास करंट। देन यू विल फाइंड ओवर हियर, यहां पे तो हमने बहुत डिस्कस किया था, यस, दिस करंट पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट है, दिस इज साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट, दिस वन, इसका ही ये एक्सटेंशन है यहां पे दिस वे, राइट, दिस वन इज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट which is warm in nature, west Australian current cold, east Australian current warm, right, ये cycle complete है। then over here you will find ये है north equatorial current और Atlantic current, ठीक है, ये हो गया Gulf Stream। See from north you will find Labrador here, this one is Greenland, it merges with this Gulf Stream over here and then it gives rise to this current which later is what, Canary current, it merges with the North Equatorial current, done. What is that current from Gulf Stream and Labrador? It is North Atlantic drift, that is to be known as North Atlantic drift,
अच्छा रहा, हाँ ये नॉर्थ पैसिफिक, देन क्यूरोशियो और क्यूराइल, ओयोशियो कोल्ड करंट, it then gives rise to this current, that is Californian current. याद हो जाएंगे? आई डोंट रियली फील कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. इफ यू आर ट्राइंग इट अगेन एंड अगेन राइट टू ड्रॉ राइट, तो याद हो भी जाएंगे. हाँ अभिषेक, around the Bay of Bengal, that is only known as North Indian Ocean current. Do you find any cold current over there? Any presence of cold current? No, because say this Indian Ocean is known as half an ocean. It is not a full ocean. See, Atlantic, you will find it extends both the hemisphere, north and south as well. Pacific, both the hemisphere. What about this Indian? It has very limited stretch in north hemisphere. So there is no scope for any cold water that is to be added. Okay, that is to be get added over here in warm current. इससे फिर क्या हुआ? You will find this current remain warm only. That is North Equatorial current, simply, or Equatorial Indian Ocean current. Above Russia, you will find this Greenland current. It gives rise to, and these are very local currents as well. These are the local currents as right. If you want to know about, so you can Google it further कि कौन से क्या type है, वो map पे दिख भी जाएगा. We are not supposed to. These are what the part of global oceanic circulation. Right? See why there is a continuous patch of this wind or current. It's just due to this body is interconnected or continuous water body, water patch. Southern Ocean it is, or Antarctic Ocean. See, यहाँ पे दिख रहा है. Over here you will find land patches in between. So there is no scope for having any this wind drift like this west wind drift, and that is what the difference, right, for north and south this hemisphere. चलो ठीक है, done, sure. Now ना ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे हम, पहले ये करते हैं क्विक. Atmospheric circulation. So are you clear with the temperature, pressure, then this global pressure distribution and Coriolis force? Now why we are discussing all these topics, you know, it's just for the sake of one critical aspect of climatology, and that is wind. ठीक है, winds. So पहले ये देख लेंगे and then we'll discuss that point of or the topic of wind. Now देखो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. अच्छा, कोरियोलिस फोर्स जो था वो एप्लीकेबल ऑन सरफेस है, तो इज इट एप्लीकेबल ऑन विंड when it is flowing on the surface? Okay. Achha, is it applicable on those vegetations, different types of vegetation? Those are on the earth surface only, na, right? So कोई केस बनता है applicability on vegetation? अच्छा, is it, you will find that this Coriolis force is applicable on that the car that is moving on the road now? It will be very less because negligible. Acha, you find that Coriolis force is applicable on me now? No, I'm standing. Okay, that means कि कोई Coriolis force नहीं है. So when someone drinks, then it started to apply. Is it? Someone is moving like without moving, it will not experience Coriolis force. Exercise and those things experience Coriolis force. Those things experience is the Coriolis force. गौरांगी, कोई फील हो रहा है कोरियोलिस फोर्स अप्लाई हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. पता चला मैं तो रूम से आ रही थी तो सही तो आ गई यहाँ पे. अगर कोरियोलिस फोर्स अप्लाई होता तो फिर लेफ्ट या राइट कहीं चले जाती ना, अनवांटेड, राइट? ऐसा ही होता.
तो विशाल कोई फील हो रहा है ऐसा? सर कुछ चकरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं? मॉनसून टाइप में फील मॉनसून आती है तब। हाँ, तभी फील होता है। नहीं, वो तो कंट्री को फील करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ फील। अच्छा, तो सब लोग झूलते हैं क्या फिर? नहीं। So do remember this Coriolis force, which is a deflectionary force, okay, that is applicable on almost everything on the Earth's surface. Everything on the Earth's surface, right? The intensity may vary, but you will find that is applicable on every aspect, and it is applicable on me, on you as well, on that car that is moving around, right? And everything on the Earth's surface. अब इसमें difference क्या है पता है? That we are now adaptive to the Coriolis force. कि जो कोरियोलिस फोर्स हम पे अप्लाई हो रहा है, हमारे पास अब वो एडेप्टिव पोटेंशियल है या फोर्स काउंटर एक्ट हो रहा है। देखो सिंपल है कि कोरियोलिस फोर्स अगर से फॉर एग्जांपल यू वांट टू मूव इन दिस वे, तो कोरियोलिस फोर्स अगर यहाँ पुश कर रहा है, इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, यू विल रिमेन इन दिस अलाइन डायरेक्शन। आर यू गेटिंग? कि कोरियोलिस फोर्स अगर 10 न्यूटन है और काउंटर एक्टिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो 10 न्यूटन का तो सेम ही हो गया ना, नो इफेक्ट। Now we are adapted to this condition now that Coriolis force is now balanced by our own creation, and that is the reason हमें Coriolis force feel नहीं होता. But that doesn't mean that is not applicable on us. Okay, almost everything. हाँ. Migratory birds, like their path will be affected or not? Yes, a bit, because they too are adapted to this condition. The two are adapted to this condition, right? वो भी तो living है. So they are also adapted to the impact of Coriolis force. So that is not a case. Yeah, maybe limited, but उससे ज़्यादा नहीं रहेगा for migratory birds. Someone travels from equator to pole. Yeah, incremental Coriolis force he would rather experience. But again, your body is what having the tolerance level. Simple है ना? The intensity of the हाँ, exactly. Yes. हाँ, pole. So over there you will feel, right? इसलिए तो wind का intensity ज़्यादा होती है ना? And what? Now the Coriolis force, you won't find कि Coriolis force directly आ रहा है कि यार Coriolis force आ रहा है और apply हो रहा है. That it selects some tools for that matter. Tools are like wind. This Coriolis force is what? It leads to intense deflection of wind, and you will find those winds are leading to your deflection. Yes. So Coriolis force तो invisible force है ना, वो तो force है, वो tangible aspect थोड़ी ना. So you will find it selects some tool to operate upon. देखो अब कोरियोलिस फोर्स है, सिंपल है कि उसके लिए चाहिए कोई टूल फॉर ऑपरेशन. यस, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास में कोई टूल चाहिए, अदरवाइज तो डॉक्टर तो कोई है ही नहीं ना, राइट? अगर सर्जरी करनी है ना, यू विल फाइंड फॉर what I am aware about the Coriolis force, usually it is applicable on this wind and climatic aspects. Now in troposphere you will find the highest density. कल जो देखा था हमने, yes, the atmosphere is the densest at the surface, troposphere, and as and when you are moving up the surface, okay, or atmosphere, the density goes on decreasing. जब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो एयर पार्टिकल्स उतने है नहीं रीच, तो कोरियोलिस फोर्स अप्लाई भी होगा तो उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली लेस है. Are you getting? Maybe on individual scale it may be higher, but on on a cumulative scale you will find कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है जिस पे अप्लाई होगा, है ही नहीं, राइट? दैट्स द केस. ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. देखो, is the large scale movement of air and together with the ocean circulation is the means by which the thermal energy is redistributed on the surface of the earth. The wind belts girdling the planet are organized into 3 cells, in each hemisphere: the Hadley cell, the Ferrel cell, and the polar cell. Now, the very first thing, as I told you, we have seen
Earth rotation time is subject to change, Earth revolution time is subject to change, and almost everything you will find that is subject to change. Position of continents, oceans, and everything. Now, you know what Earth is doing, Newton's law of inertia, that is the case. Okay, that every body try to remain in its position, whatever it is, right? जो भी position है उसमें रहने की उसकी natural tendency है. Same is the case that is applicable for Earth as well. Now, say Earth, अब Earth पे इतने सारे forces work कर रहे हैं, gravitational force of Sun, Moon, Jupiter, Saturn, and all those celestial bodies, and maybe other centripetal, centrifugal, those way. Now, if Earth want to retain at its position, Earth को क्या करना होगा? Counter force produce करना होगा. Yes, जो force apply हो रहा है उसमें काउंटर फोर्स भी क्रिएट होगा, तब अर्थ स्टेबल रहेगी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस वाले केस में, कोरियोलिस फोर्स वाले केस में. सो टू क्रिएट अ काउंटर फोर्स, अर्थ हैज अडैप्टेड सम डिफरेंट मीन्स. ओके, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ओके, एंड वन ऑफ द मीन इज व्हाट? एनर्जी बजट और हीट बजट, दैट वी विल डिस्कस नाउ, राइट? हीट बजट वो भी टॉपिक है हमारे सिलेबस में. So energy is redistributed over the surface of this. Just imagine कि Earth है and Earth is what being heated by the solar radiation continuously, and there is no outpouring of that energy, or that energy is what remain accumulated in the Earth atmosphere. क्या होगा with the time? Earth का temperature increase होगा and Earth will fill से centripetal, centrifugal for imbalance हो गए, you will find either sun में collapse होगी या इधर space में कहीं चली जाएगी, right? So the thing is, in order to maintain this angular momentum or balance, what Earth has to ensure energy distribution. अब देखो उसी में भी कल हम और डिस्कस कर रहे थे, 21st of June, 23rd of September, 22nd of December and 21st of March. सबसे ज्यादा परपेंडिकुलरिटी कहां थी? Equator. Yes, on which date? 21st of March and 23rd of September, 2nd, 3rd, whatever, right? So on that particular scale, what you will find, you know, as solar radiations are more perpendicular on this particular equatorial region, जिससे equatorial low बना है, that energy would rather remain accumulated over here only. Yes, यही पे accumulated रहेगी. Now, अब पोल पे तो कभी भी एनर्जी आ ही नहीं रही है, never. You will find inclined and say what, more or less very inclined, highly inclined solar radiations over there. Now, if this condition prevails, what happened, you know, this even on the Earth's surface, you will find different pockets of temperature. इक्वेटर पे बहुत ज्यादा या एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है, then followed by tropic, then somewhere around in the low territory, pole. Now, if that is the case, Earth would be, again, it would lose its shape, geoidal shape जो देखा था हमने, right? Geoidal shape. Now, in order to keep that balance, what Earth has devised some means. कि क्या करना है हमको? देखो सिंपल, गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्स ले रही है, राइट? कभी पे किया टैक्स? यस, टैक्स तो पे किया है जब जॉब कर रहे थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे दिन थे सर, अब ये वाले थोड़े डिफिकल्ट है. ओके, तो देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है. यू विल फाइंड अंबानी, अदानी, राइट, इनके पास ह्यूज वेल्थ अक्यूमुलेटेड है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डाउन प्रोडेंट, यू विल फाइंड दे आर नॉट हैविंग इनफ say resources even to have say food for one single time or a day. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? being a responsible government, you will find tax by means of taxation, it collects that excess money, okay, whatever that legitimate money has from this wealth owner, and it redistribute that wealth to the one who is in dire need. Are you getting this thing? कि फ्री हेल्थ दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं. व्हाट इट मींस बाय, पैसा तो टैक्सेशन से आ रहा है, राइट, एंड दे आर इन्वेस्टिंग दिस फॉर द सेक ऑफ दिस पुअर और दोज हु आर इन नीड.
अब यही प्रिंसिपल अप्लाई करो ओवर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी कहां आ रही है? इक्वेटर, राइट? एंड बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल मदर अर्थ, it's now its duty to redistribute this excess energy to this polar. अब अर्थ इज नॉट ए लिविंग बीइंग इन अ ट्रू सेंस, ठीक? बट अगर अर्थ को अपना शेप मेंटेन करना है, राइट, अर्थ को बेसिकली अगर इनर्शिया मेंटेन करना है, यू विल फाइंड कि ये जो है ना, दिस एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन इज प्रीटी मच नेसेसरी. So it will what? Collect this excess energy and transfer it to the spirit. Have you seen? अच्छा, ये क्लियर हो गया पर्पस एटमॉस्फेरिक, what this reason behind atmospheric circulation first, energy redistribution. अच्छा, you must have seen now वो gear arrangement देखा है? gear arrangement, gear rotating gears are there. ओपन होगा या नहीं होगा? चलो ठीक है, वो नहीं होगा. सो यू विल फाइंड, देखो गियर अरेंजमेंट क्या होती है. मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल तो है, एनी इंजीनियर? नो. यस, हाँ, शार्दुल, हर्षित, यस. सो या तो आपने कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल की ऐड देखी, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल की, जिसमें इंजन देखो घूमता रहता है, राइट? तो इसमें क्या होता है पता है कि ये गियर 1 है फॉर एग्जांपल, इसके और भी कुछ गियर के टिथ रहेंगे. ओके, यू हैव टू इमेजिन नाउ दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है? और मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा पुअर है, तो ये आपको समझना होगा कि ये गियर है. अब इसमें क्या होगा पता है? देखो गियर का पर्पस ये होता है कि एनर्जी, टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है? ऑलमोस्ट कीपिंग द सेम अमाउंट. अब ये गियर जब रोटेट होगा इस वे में, ये क्या करेगा? इस गियर को चैनलाइज करेगा या रोटेशनरी मोशन देगा, ठीक है? दिस गियर विल सेट इन रोटेशन देन, एंड व्हेन दिस रोटेट इट लीड्स टू रोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गियर, ठीक है? क्या हो गया देखो, दिस गियर यू अप्लाइड और यू प्रोवाइडेड एनर्जी टू दिस गियर, पर एनर्जी ट्रांसफर हुई इस गियर में. आर यू गेटिंग दिस थिंग, राइट? अब यहां थोड़ा विजुअलाइजेशन करना होगा, जस्ट बिकॉज आई जस्ट फॉरगेट टू ऐड दैट व्हाट डायग्राम ओवर हियर, ठीक है? दैट पिक्चर एक्चुअली गियर वाला. हाँ, सो व्हाट अर्थ now has developed this mechanism. See, equatorial is actually having a huge cushion of energy, right? It has a huge accumulation of energy. अब यहां से क्या करना है? This is what that gear, which is what we provided energy, okay? And we have to transfer this energy to the next gear. देखो ये next gear है, cell, atmospheric cells, right? And this cell transfer its energy to this polar region. जैसे इक्वेटर से पोलार पे डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही है, मे बी बाय मींस ऑफ सम कंडक्शन प्रोसेस यू विल फाइंड ट्रांसफर, बट जब एटमॉस्फेयर से ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दिस एनर्जी ट्रांसफर इज बाय मींस ऑफ दिस सेल्स. फॉर अस दोज आर लाइक इक्विवेलेंट टू गियर्स. So there are 3 gears or there are 3 cells, those are in operation in upper atmosphere. अब देखो ये है अर्थ का सरफेस, और भी बेटर विजुअलाइजेशन करना है, you can have this as well. See, this is what equator, okay? You will find due to excess solar energy, right, radiation, यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हो गया, हाई टेम्परेचर, yes. अब जब कल हमने डिस्कस किया था कि जब टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे बाय मींस ऑफ बर्नर, तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल विल मूव अवे फ्रॉम दैट लोकेशन. यू विल फाइंड यहां से एटमॉस्फेरिक पार्टिकल विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. 50 पार्टिकल्स दोज वी वर डिस्कसिंग. ये क्या करेंगे? दे मूव अपवर्ड. देन इन द अपर एटमॉस्फेयर में बी 5 to 6 or 7 to 8 10 kilometers almost around,
you will find it gets rightward bend और leftward, depends on hemisphere. ठीक है, अगर साउथ हेमिस्फीयर में तो ये ऐसा चला जाएगा साउथ पोल के पास, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो it will move accordingly. Okay, and what happen, it further carries energy, right? यहां पे भी एनर्जी है, यहां पर भी एनर्जी है. It then descends, and while in descent it transfer its energy to the next gear. Yes, जो अभी gear arrangement यहां देख रहे थे हम, देखो कहां गया वो gear. Yes, this one. This gear transfer its energy to the second gear. Okay, and then it transfer this energy to third gear. देखो अब यहां पे कनेक्ट करना, इक्वेटोरियल अपवर्ड मूवमेंट, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कैरी हो रही है. दिस एनर्जी बाय मींस ऑफ विंड एंड मॉइस्चर, you will find it gets rightward or leftward, whatever that bend. Okay, and it then moves towards the equatorial position. अब ये क्या होगा, कंटिन्यू करेगा उसकी मूवमेंट, एंड देन इट प्रोवाइड इट्स एनर्जी टू द नेक्स्ट सेल. ये सेल्स एक्टिवेट हो गया, ठीक. दिस सेल देन ट्रांसफर इट्स मींस मूव अकॉर्डिंगली, कंप्लीट दिस सेल, एंड इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द पोलर सेल. It continue its journey, it again connects over here, and this is how the whole cycle operates. Energy is now transferred from equatorial position to polar position. Getting it? Sure? Yes. Shardul, yes. हाँ, upper atmosphere, हाँ, 4 to 5 kilometers. नहीं, प्रेशर डिफरेंस तो है ही वहां पे. देखो एक सिंपल सा फैक्ट होता है क्या, अब इसके बियॉन्ड है ना कि विंड की डेंसिटी नहीं होती. देखो सिंपल कि अब जैसे कि यहां से अगर कोई एयर अपवर्ड मूव कर रही है तो इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी कि जहां तक डेंसिटी फेवर करेगी, जहां तक प्रेशर फेवर करेगा, तो it will move accordingly, and when you will find that ceiling occurs, right, that ceiling leads to, वो डाइवर्ट हो जाएगी accordingly towards the poleward region. तो जहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहां पे लो प्रेशर है, इसके ऊपर बनेगा हाई प्रेशर इन दी अपर एटमॉस्फेयर 4 to 5 किलोमीटर. तो फिर यहां से ये क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर दिया है उस रीजन में, उसके इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगी, राइट. सो इट देन लीड टू दिस poleward journey. It begins the poleward journey then. Right, that is the case. Clear, all you guys? Sure, no doubt. Abhishek is, yeah, please. Yes, Abhishek. Doubts आ रहे हैं, okay, yeah, so doubts are still in process. Okay, ठीक है. So by the time you must have noted this slide, ठीक है, ये कंटेंट किया है. Now this diagram you have to draw this cell. Okay, again I am telling you नॉर्थ और साउथ में 3 सेल वर्क करेंगे, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर रीजन. यहां पे 3 है और यहां पे भी 3 है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. Equatorial cell, that is known as Hadley cells, okay, or that is also known as tropical cell. This central cell, that is known as Ferrel cell, and the third that is in polar region, that is itself known as polar cell. अब देखो इसका ऑपरेशनल रीजन समझ आ रहा है, कहां पे वर्क कर रहा है. कैन यू कनेक्ट इट विद द ग्लोबल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम? यस, ग्लोबल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से कनेक्ट हो रहा है ना. इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई. दे डिफाइन द बाउंड्री ऑफ ईच सेल. Equatorial low from where it all begins, then at subtropical high Hadley cell somehow ends, right, and then at subpolar low it descends further, और फिर ये प्रोसेस चलेगी ऐसे. It may seems
कंफ्यूजिंग, बट इसको रिवाइज किया ना तो I believe that is easy to understand as well. So this concept was given by atmospheric circulation concept was given by, you can additionally note down, by Palmain in 1951. It is also known as alternatively meridional circulations or three cell circulation system or circulation system. This tropopause, wherein tropopause is the cause or the effect of this cause or physical effect of this. It is absolutely not a cause. I'm just trying to connect it in terms of effect. Cause is for the circulation. The cause is solar radiation. Air goes up and diverges in the upper atmosphere. It happens because of the presence of tropopause. Partly, right? Because let me see. Wait. Okay. One of the reason is what, that end, right? That divergence happened, right? It is due to
tropical tropopause. ठीक है? So but the thing is, tropopause is not that what cause as such. It is one of the factor that influences the cell. Anyway, Earth will ensure that energy will transfer to the poleward region, right? So tropopause is what only doing, it is now leading to a what divergence of that air particle. So I guess that is not a causative factor. The cause is only what uneven distribution of energy on the Earth surface. If anyhow the temperature on the equator increases, Huh? the density of the wind increases, of the air increases. Decreases. Increases. Density of the air increases and temperature of the equator increases as well. Then is it possible? Wait. If temperature increases, in that case, density for sure will decrease, because temperature and density shares inverse proportionality. Simple. The last lecture, 150 particles, you remember, right? So in the low temperature condition, 100 particles were there. High temperature condition, 50 particles were there. So density is a bit less. In the same space, concise space, there were 100 particles and now 50. So density, now you can consider any one case. Okay, either density increased or either temperature increased. Yeah. When you say that the wind air goes up, and it diverges because the density is not enough to go further. So that's why it diverges. So how can tropopause be the cause of divergence? How can tropopause be the cause of divergence? Density, divergence is the function of density, and how can tropopause be the reason for divergence? Density and divergence. He's asking for, yeah, please. Yeah, no. So by the time I'll think for, no? Why does the air diverge when it goes up? Right? And so it told us that when the air goes up, its density increases. And there is no enough momentum or enough mass, so it diverges. That's right. How does the divergence actually happen? It is, as the diagram shows, due to in connection with the tropopause. Okay, the divergence now. But even I have to think for how the tropopause lead to that particular case, the divergence as, okay, because that ceiling over there, that is what the tropopause. So density decreased and tropopause. I guess. How can tropopause act as a ceiling, because tropopause is less denser than. Absolutely, it is less denser than. But now I think that is what. See. Okay, are you done with this? Yes. No. So what they go in atmosphere, you will find this pause are there, the zone of somehow constant temperature condition or atmospheric conditions. So what happened now again? I had to look further the exact properties of the tropopause. But as this tropopause is a bit stable region, right? This is the region that keeps this phenomena divert. The reason being, because see the temperature conditions over are a bit different, right? More or less same for 10 kilometers always the margin. Okay. So what happened due to this fact? Say the lower this uprising moisture, it just further unable to penetrate further, and whatever that penetrate, right? देखो अब ये जो है ना evaporation from equator, it mainly happen by means of or in terms of moisture. So the thing is, this energy transfer, as I told you, it is by means of some tool, adapting some tool. So adapting tool, it means moisture is that tool, wind,
right? And what happened now, as tropopause is there, it acts as a barrier, which is a constant, like say India-Pakistan boundary. That is what a barrier, right? So this tropopause, it acts as a barrier due to its constant temperature or stable conditions. Okay. Now, whatever moisture that able to penetrate, it moves upward, but that is very limited amount. That is what mainly a porous amount that further able to move, and then it moves along this direction. So I guess the reason for this barrier behavior of tropopause is itself that constant temperature conditions of it, because that is a zone of neutralization, right? Neutralization, it means what? India and China, right? So you will find they are at constant war. So there lies a neutralization zone, and same is this tropopause as well, I guess, right? So I'm not sure, but 90% that must be the reason. So it is unable to allow it to penetrate further. Simply enough, there lies a neutralization. For example, India or China make neutralization state hai, Bhutan. Now, whatever happen, if the kind of relation between India and China, they are at the very warhead, Bhutan will never allow it to happen, at least on the northeastern boundary. That is a neutralization state, right? अभी भी भूटान ने क्या किया, चाइना के साथ सेपरेट ट्रीटी करके सॉल्व किया, बट just like same is the case. Now, this tropopause, it won't allow this energy or moisture to penetrate beyond troposphere. It acts as a neutralizing agent, and that's why it has to diverge. Now, it may penetrate this barrier as well, provided कि इंडिया के पास में अब लेना है पॉलिटिकल विल कि भूटान को भी हम ओवरराइड करके वॉर कर लेंगे, या चाइना ने जैसे किया था 65 में, राइट? इन दैट केस this tropopause as a barrier may lose its character if the excess energy is provided. Are you getting? So it may lose its character, this energy may, then maybe this cycle may operate in stratosphere. Then ozone would be the next barrier. Then stratopause would be the next barrier, right? Are you getting? So these are what the kind of constants. It is, yeah, and that is absolutely not a rigid boundary. Further, you will find this is how the tropopause works. So that is the case. And sir, also this Coriolis box, does it end on the upper atmospheric circulation? Yes, but say 3 to 4 or 4 to 5 kilometers, that does not have that significant role to play for. So it is mainly the surface and up to 4 to 5 kilometers, 5 to 6 kilometers maybe. It depends. Or to be more appropriate, tropopause. But beyond that, you won't find that significant impact of that Coriolis force astro. Sir, in that column, we equate the moisture is going up. So when it's going up, so its density is increasing. तभी तो ऊपर जाएगा, moisture density. After a certain region, it will tropopause. Tropopause. It starts moving over. Yes. But sir, at the troposphere, the temperature is decreasing. In the top, and troposphere में temperature is constant. So why if the temperature is constant, it should move, it should just keep going up, and उसके बाद तो temperature high होगा. But the thing is that this tropopause, it won't allow the further penetration now, because see now it will happen provided, for example, to break the tropopause stability, right? It needs for example, say 100 newtons of force, energy, kilocalorie, for example. See, right? Now, as you are asking for कि sir यहाँ temperature constant है, यहाँ temperature decrease हो रहा है, variable है. Now, to break this tropopause as a barrier, it needs 100 kilocalorie of energy. But as of now, Earth is providing only 50 kilocalorie of energy. Exactly. So now even this uplifting moisture does not have that capacity to break the barrier of tropopause. अब जब say maybe in future with the global warming case, it may be a case कि Earth supply कर देगी, equator supply कर देगा 100 kilocalorie of energy to break the barrier of tropopause, that it will penetrate further in the atmosphere. And then the next barrier would be stratopause, maybe. Depends on, क्योंकि ये बैरियर जोन्स है ना, काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जोन्स है कि जहां पे ट्रोपोस्फियर लूज कर रहा है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटोस्फियर भी लूज कर रहा है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स. विशाल, gravity is also working there. Gravity in which sense? Gravity pushing, attracting the air particles.
getting outside of the tropopause. Yeah, that may be a reason, because again on the surface, but the what we are looking for this divergence. The question is, it is not about this tropopause, the question is for this divergence. क्योंकि सिंपल है, जब यहां नहीं जा सकता तो ऐसे जाना पड़ेगा उसको, राइट? कि चाइना को हरा नहीं सकते तो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे हम, ऐसा ही है ना, दैट वे. ओके, सो दैट मस्ट बी द रीजन. और भी कुछ टेक्निकल हो सकता है, नो डाउट. ओके, चलो ठीक है. सो एटमॉस्फेरिक, हैव फ्यू लाइंस नाउ अबाउट ईच ऑफ दिस सेल्स. ऑनलाइन एज वेल, प्रतीक्षा, आदित्य, आस्था, भूमि, गौरव, किसी को कोई डाउट है? अगर हो तो यस, इट इज वेलकम. फर्स्ट, कीप दैट हेडली सेल्स. Headley cells located between 10 to 30 degree in both the hemisphere. Located between 10 to 30 degrees both the hemisphere. This is thermally induced cell. This is thermally induced cell. Highlight this word. Induced. INDUCED, induced cell, and energized by intense solar radiations. Intense solar radiations. The rising air, comma moisture, or bracket moisture, cools down below the tropopause. This is again one of the reasons. Cools down below the tropopause and diverges towards. Sir, this is the reason. This is one of the reasons. This is the reason for this. The rising air or moisture cools down below the tropopause and diverges towards the pole as anti-trade wind. As anti-trade wind. Anti-trade wind. Anti or anti. US accent, you know, anti. So, whatever. Then, they lead to upper air. They lead to upper air. Lead to upper air up to 30 degrees. Up to 30 degrees. And descends. Descend, it means to move downward. Ascend, it means upward. Descend, downward. Descends at subtropical high pressure. At subtropical high pressure, further intensifying it. Further intensifying it. Further intensifying it. हाँ हाँ तो लो प्रेशर है, तो इससे विंड इज गोइंग टू द हाई प्रेशर एरिया. बट जब विंड आती है लाइक सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो पे भी आती है, हाँ, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया कि कैसे? हाई टू लो जा रहा है या लो टू हाई जा रहा है? क्योंकि देखो ना फिर. विंड तो फिर हाई टू लो फ्लो ही चाहिए ना, हाई प्रेशर लो पे चाहिए. हाँ, बिल्कुल. पर ये तो लो टू हाई प्रेशर. कहाँ हो रहा है ऐसा? सर जैसे इक्वेटर पे लो प्रेशर भी हो रहा है ना, बिल्कुल. तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो नीचे से हो. अब इसमें एक देखो. अब इसमें क्या होता है? अब इसमें वैसे अभी कंटिन्यूएशन, बट फिर भी ठीक है. देखो, कभी भी याद रखना, से अगर सरफेस पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो इसके अपर सरफेस पे क्रिएट होगा हाई प्रेशर. ठीक है, ओके. इसके यहां पर है हाई प्रेशर. देखो, अच्छा, ये आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम? यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? देखो, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, ठीक है. दिस वन कोई भी ले लो वैसे. दिस वन, ये डायग्राम है 3D वाला केस. ओके, इक्वेटर, ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड पोल. ठीक है, इसको ही हमने इस सेक्शन को ना ऐसे खड़ा कर दिया.
Are you getting? Equator 30 degree, 60 degree and pole, right? That half this way. ठीक है? अब ये वर्टिकल सेक्शन में ये कैसे ऑपरेट कर रहा है? दिस इज हेडली सेल, दिस इज फेरल सेल एंड दिस इज पोलर सेल. नाउ देखो, अब यहां पे हाई प्रेशर बन गया, यहां पे हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई पहले ही है ना, राइट? इसके ऊपर क्या बना? लो प्रेशर, राइट? अब बिल्कुल, अब देखो, अब यहां पे एक ये है कि सरफेस पे विंड कभी भी ब्लो करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट? देखो ये एरो ऐसे ही दे रहा है, दिस आर टू बी नोन एज, ये भी देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है, ये हो गए एंटी ट्रेडविंड्स. अब एक फर्दर फैक्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वैसे इतना ज्यादा जीएस के लिए जरूरी नहीं है, बट स्टिल दैट सरफेस पे विंड ब्लो करेंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट जब विंड वर्टिकल मूव करेंगे तो कैसे करेंगे? यस, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. तो सरफेस पे जो विंड मूव कर रहे हैं, देखो ये सरफेस को हॉरिजॉन्टल, ये मूव कर रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बट यही विंड जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे, वर्टिकल विंड्स, राइट? तो ये वर्टिकल विंड्स जाएंगे लो प्रेशर से हाई प्रेशर, जस्ट टू काउंटरएक्ट दिस वे, राइट? तो उसका फिनोमेना अलग है कर कुछ, बट यस दिस इज हाउ. तो कोई प्रिंसिपल निगेट नहीं होगा, सिर्फ ये प्रिंसिपल, ये रूल आपको पता नहीं कि मतलब वर्टिकल विंड्स इट मूव्स अकॉर्डिंगली, ठीक है? सो दैट्स द केस. चलो, यस. हाँ, सरफेस विंड्स ये है, देखो ये वाले, ये सरफेस विंड्स, ये हो गए वर्टिकल विंड्स, यही था ना? हाँ, ये वाले वर्टिकल विंड्स जा रहे हैं, ये एक पैरेलल है, इसीलिए ये फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब वो वाली डायग्राम अगर मैं ये हाई प्रेशर लो प्रेशर बताता तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता, ठीक है? सो इट्स बेटर कि इतने ही डायग्राम से समझना है उसको. नेक्स्ट, द फेरल सेल. The cell extends from 35 to 60 degree, 35 to 60, ठीक है? ये 70 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन in both the hemisphere, 35 to 60 degrees in both the hemispheres. This is thermally indirect cell. Headley cell was thermally induced cell, direct cell, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी आ रही थी वहां पे. अब ये सेल डायरेक्टली एनर्जी से नहीं चैनलाइज हो रहा है, ये इक्वेटर की एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है उससे ऑपरेट हो रहा है. एंड इंड्यूस्ड ड्यू टू डायनामिक फोर्सेस. There is subsidence of air or descent simply, ठीक है? Same downward movement, subsidence of air in the horse latitude, subtropical high pressure, from tropical as well as polar front cells. Which drives the energy then towards subpolar region, by westerlies.
at subpolar low pressure, sorry, subpolar low pressure, yes, subpolar low pressure, it ascends ASCE and DS, it ascends and diverges at tropopause and diverges at tropopause. Next and the last cell, polar cell. Polar cell or polar front cell. That is also polar front cell. It extends from 65 to 90 degrees in both the hemisphere, 65 to 90 degrees in both the hemispheres. And strongest during winter in both the hemispheres, and strongest during winter. Highlight it. There is descending air. There is descending air along the poles, descending air along the poles, which moves towards the subpolar low, which moves towards the subpolar low, subpolar low, it means low pressure belt that we have drawn, as the easterly winds. Highlight this easterly, westerly जो भी लिखा है हमने, highlight it as the easterly winds. Full stop. At subpolar low, easterly and westerly, the easterly and westerly merges and the air rises. And the air rises to complete the cycle, complete the circulation. To complete the circulation. This mode is called diurnal circulation. It is alternatively known as meridional circulation or tricellular circulation or three-cell circulation. Okay, sure. So this is about this pressure distribution. Confusing है? Easy है? Yes, sure. Sure. Yes, always. Why subtropical is high pressure and तो अब आप उस पोजीशन में हो that I can explain you what is the reason for, right? Now, see, equator low pressure, no doubt, ठीक है.
polar high pressure, ठीक है, HP. Now it is expected that this tropical region again has a high temperature, right? High temperature है ना यहाँ पे भी. ट्रॉपिक पे डेजर्ट है हमारे पास. देखो वर्ल्ड के डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है, हमने देखा था ट्रॉपिक. तो डेजर्ट जहाँ है तो टेम्परेचर भी तो ज्यादा ही रहना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट द राइट थिंग मींस, राइट लॉजिक. डेजर्ट अगर ट्रॉपिक पे ज्यादा है तो टेम्परेचर भी वही ज्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो लो प्रेशर मस्ट बी डेवलप्ड ओवर हियर, ठीक? एंड वी इमेजिन कि लो प्रेशर ही डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, हो भी रहा है बाय मींस ऑफ टेम्परेचर फैक्टर, ठीक? अब देखो अब हो क्या रहा है इन एडिशन. लो प्रेशर, वी जस्ट इमेजिन इट, राइट? यहां पर भी लो प्रेशर है, यहां पर भी लो प्रेशर है. नाउ व्हाट हैपन, से अब ये जो राइजिंग वेयर है, विंड है, असेंडिंग विंड, मॉइस्चर के फॉर्मेट में ऊपर जा रही है. Then you will find precipitation over here. That is what the reason के equator is known as 4 o'clock region, where you will find daily rainfall, ठीक है, due to excessive evaporation there, moisture format. Then it takes a bend, diverge, ठीक है. And what happened now? See this wind or this energy, this wind, क्योंकि energy किस कैरी तो करने के लिए कुछ पार्टिकल चाहिए ना, right? So this wind then moves downward. अब just imagine low pressure, it means 50 particles were there. We just imagine over here 100 particles were there, ठीक है. 50 चले गए, बचे 50, 25 this branch, 25 this branch. Okay, this 25 particles now say they are moving toward this, ठीक है. पहले हम इसको 100 भी माने तो भी चलो ठीक है. Now what happened? This 25 particles they descend further, and now over here you will find 25 plus 50 कितना हो गया? 75 particles are now applying a pressure on this region. It must be higher than this low pressure. Like if we consider कि हर पार्टिकल सेम ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहां पर है 50, यहां पर है 75. It will lead to high pressure. ठीक है, agreed? Yes, ये क्लियर हो गया कि why subtropical high pressure is there. Particle is cold. This particle are no doubt they lose their moisture capacity as well, but अभी भी उनके पास at least mass तो है that applies on the surface. You will find that is applicable on the surface, जिससे pressure increase हो रहा है, ठीक है. Now what happened? See again, अब यहां से क्या होगा? Air diverge होगी, and you will find again some particle, right? Few particles you will find यहां पे जा रहा है, ठीक है. देखो एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It transform from one form to another form, one region to another, ठीक है. So यहां पे क्या हो गया? कुछ पार्टिकल, say for example again 20 particle for example, इतने नहीं आएंगे बट फिर भी कंसीडर करते हैं. What happened? This particle they are now at subpolar region. We are not sure कि लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या बन रहा है अभी, ठीक है. तो अब यहां से ये पार्टिकल चले गए, बट अलोंग विद दिस, क्योंकि यहां पे कंडीशन कुछ है, इट लीड टू अपलिफ्टमेंट ओवर हियर. देखो यहां पे जो केस हो रहा था, यू विल फाइंड सेम ओवर हियर असेंडिंग विंड्स, ओवर हियर ascending wind, and wherever you will find ascending wind, low pressure, that is the destiny. Exactly. Where you will find descending wind, pressure बढ़ रहा है. Where you will find ascending wind, pressure कम हो रहा है. So that is the reason low pressure over subpolar region, high pressure over subtropical or tropical region. I know a bit confusing. You have to imagine for that matter. Okay. Pole now again. Now what you are asking me for, is, sir, prove me P is directly proportional to T. PV equals to nRT. Right? ऐसा ही कह रहे हो कि सर इसी को प्रूफ करो. क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये है क्लोज सिस्टम. एंड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर कि सर इतना ही एक्सप्लेन करोगे. सी, अर्थ सरफेस इज ओपन सिस्टम.
it freely interact with its other constituent parts as well. So if you don't consider this part, this you may obtain what result you want, but फिर वो sense नहीं बनेगा ना, क्योंकि result नहीं आएगा ना उसका, क्योंकि it has its impact on this part as well. Because the gear arrangement जो अभी देखा हमने, कि gear arrangement ऐसे ही तो transfer होगा, otherwise तो वो हो गए. Are you getting this thing? So it is not just a matter of this particular force. You have to look this issue in synchronization or this concept in synchronization, right? क्योंकि ये start हुआ था यहाँ से, देखो. This is what the reason. Over here it all started. And if you won't consider this fact, तो फिर तो समझ ही नहीं आएगी ना वो चीजें. That is the case. Okay. Again, any doubt? नहीं, ऐसा नहीं होता गौरव. It's like you will find कि हर किसी के लिए कुछ कंडीशन डिफरेंट होती है, ठीक है. सो चलो ठीक है. यस, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट तो नहीं कर पाएंगे हम. काजल रहने दीजिए सर, हम खुद ही पढ़ लेंगे जो टॉपिक से. रियली काजल? आज के लिए रहने दीजिए सर. ओके ठीक है. नाउ अगेन दैट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डायग्राम, 3 स्टेज एक्टिविटी. फिर से एक बार डायग्राम कल जो किया था हमने, तो सेम अगेन ट्राई टू पिक्चराइज दिस इमेज इन योर माइंड. 3 सेल सर्कुलेशन. ओके, दिस बोथ राइट. ये वाली भी डायग्राम, दिस वन हैव यू ड्रॉन इट? ये वाली नहीं, तो ड्रॉ इट. बी क्विक. Yes, Asta, I'll make sure those will be made available to you today itself. Today means, yeah, on the portal, ठीक है? Madhu ma'am told me as well. You were asking for, na, that PPTs? Yes. Ocean resources as well. सिर्फ आगे पीछे लेक्चर में देखो. हाँ, ये मैंने सेंड नहीं किए इसलिए अभी तक अवेलेबल नहीं. ये मेरे एंड से इशू है फॉर एटमॉस्फेयर, बट ओशियनिक रिसोर्सेज यू विल फाइंड that has already been uploaded. हाँ, वो 2 पीपीटीज नहीं होगी ना. आर एटमॉस्फेयर, लिविंग एटमॉस्फेयर, और ये वाला है प्रेशर बेल्ट्स वाला, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट. तो यस, मैंने डाउनलोड कर रखी है, बट मैं सेंड करना भूल चुका हूँ उसे. या आई विल बी डूइंग बट फॉर श्योर. नहीं गौरव, ऐसा नहीं होता. ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यू नो. सिर्फ ना इसमें लॉजिक और कंसेप्ट समझ आ गया तो यू विल फाइंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी टू सब्जेक्ट फॉर. बट हम ना जनरली होता क्या है ना कि हम इसको कंसेप्ट से समझते नहीं है. हम इसको ट्राई करते हैं कि रट्टा कर ले. जब याद ही रखने की कोशिश करोगे तो लॉजिकल सब्जेक्ट याद थोड़ी ना होगा. लॉजिकल सब्जेक्ट तो जितना समझोगे लॉजिक से उतने ज्यादा अच्छे से याद होंगे. हाँ, बट टाइम टेकिंग होता है ये हल्का सा.
बट बिलीव मी वंस यू अंडरस्टूड दिस दैट कंसेप्ट राइट, तो फिर ना उसके बाद कोई आपसे वो चुरा नहीं सकता ना ये नॉलेज, राइट। अब ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अब ये इतना अच्छे से समझ आ गया कि अब कहीं नहीं जाएगा वो चीज। मुझे तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट बेवफा लगते हैं। ये तो आर्ट्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना गौरव। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो बहुत ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूल फाइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट्स और से। चलो डन विथ, यस डन। 30 सेकेंड 30 सेकेंड अगेन, नो वेट गौरव, 30 सेकेंड फिर से एक बार डायग्राम ट्राई टू इंप्रेस इन योर माइंड दिस डायग्राम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, या try to imprint it. नो साक्षी क्लाइमेटोलॉजी से नहीं रहेगा, ओशिनोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। इजी पेपर रहेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है वैसे। एस्ट्रोनॉमी एंड ओशिनोग्राफी, हाँ पोलर फ्रंट सेल, front is a different phenomenon anyways, polar cell or polar front cell, that is the same. So we will discuss it after air mass. Done, yes. So over here, no, देखो again no rain, हाँ yeah, a bit less rainfall, bit no in the that is the extremity in itself, so a bit less rainfall, yes. Because why, see why, this moisture is there. Now this moisture will rather condensate when it moves up in the atmosphere, so it lead to precipitation here. But at 10 to 12 kilometer of this margin, when it further continue its journey, it is devoid of moisture now, and then it descends further again in the condition of no moisture, so there is no rainfall over here, or means again the less rainfall in comparison. That is the reason. Okay, now agar yahan pe atmospheric river is there, so that case may be different. Okay, that is the case. Chalo 10 second, do close your eyes and recall the diagram. Yes, all you guys, you have to. Okay, it may seem ki kuch thoda alag chal raha hai, but still do recall that diagram. Done? Yes. Now draw it again. किस टाइम तो चलता रहेगा। अच्छा वो भी है क्या? ठीक है, 30 सेकेंड से क्या होगा? Yes, draw it guys again. Because I know on your own you are not going to do it again. So it's my what duty, request, whatever. हाँ दोनों।
Gaurav, are you joking really? Okay, अच्छा. Yes, that's a good thing. Good to know fact. No thing, Gaurav. And yes, wish him all the best from my side as well. Done? Sure. Okay. So चलो ठीक है guys. So this is all about for today, and we'll be meeting tomorrow on 9. ठीक है 9 a.m. Yes. So thank you all you guys. Aditya, Asta, Bhumi, Gaurav, Pratiksha, Kajal. Yes. Twishi, all you guys. Thank you and have a good time.